Should we not wait for the other students to come? पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, टाइम तो हो गया ना, तो हम लोग तो बैठ. Alright, sir. Okay, we can start. Why should we wait for others? They should be on time. Okay. Okay, बेटा. तो अभी हमारे पास है, we have that R net in series is equals to R1 plus R2 plus R3 and Rn, and R in parallel, R net 1 upon R net in parallel is equals to 1 upon R1 plus 1 R2 plus 1 upon R3 plus Rn. Okay. And I have already told you that suppose all resistors are of same resistance. सारे रेजिस्टर सेम रेजिस्टेंस के हैं. लेट आर कंसीडर कर लेते हैं, आर के हैं. तो 1 अपॉन आर नेट is equals to 1 upon r plus 1 upon r plus 1 upon r plus 1 upon rn. You knows very well. तो हम लोग सबका एलसीएम r कंसीडर कर सकते हैं, और 1 plus 1 plus 1, अगर ये तीन रेजिस्टर्स होते तो हमारे ऊपर पास वैल्यू आती, दैट वुड बी 3. If there were 4 resistors connected, same resistors 4 parallel में connected है, then we will going to write here 4. अगर n resistors connected होंगे, then we will going to write here n. So we can write here n is equals to 1 upon r net. So we can write here r net is equals to r each upon n. Got it? Got it? Yes. Okay. So ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगे. ओके, लेट्स मूव. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि अगर आपको एक 12 ओम का रजिस्टर और एक 12 ओम रजिस्टर है, एक 6 ओम का रजिस्टर है, ओके, एंड अनदर वन इज ऑफ 3 ओम. 3 ohm, they are all connected in parallel. So here you need to calculate the R equivalent. You have to write here 1 upon 12 plus 1 upon 6 plus 1 upon 3. Then you have to bring the LCM 12. So 1 plus 3 into 2 into 2. So this will become 12. So you can write it 2 other 2, and here you have to write here 4 into 4. 4 into 4 is 4. So you have to write here 7 upon 12. Okay. That is 1 upon R equivalent. So R equivalent would be equal to 12 upon 7. Got it? Again. Again means you have to simply write it, add it, and then you reciprocal this one, because you need to bring the R equivalent na, so you reciprocal this one. Got it. Okay. And one important thing is that कि आपको हमेशा याद रखना है कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टर से कम की वैल्यू पाएगा. यानी कि अगर मैं मानता हूं कि मैंने कितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड किए, इसमें सबसे smallest resistor is of 3 ohm, so the answer would be of should be smaller than 3 ohm. You can check 12 divided by 7, so you will get 7 1 7, and then here you will find 5, then point, then 0, then 7. It will be approximate 1.7 or 1 ohm. Okay, so equivalent resistance 1.7 ohm क्या रहेगी. तो इस तरह से आपको कंसीडर कर लेना. दूसरा, अगर सारे रेजिस्टर्स सेम ओम के होते, सपोज दिस इज ऑफ 6 ohm, and the one is also 6 ohm, another one is also 6 ohm. They are all connected in parallel. So what you need to do here is 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm. So what you need to do here is that you have to simply R equivalent in parallel is equals to R each upon n. कितने रेजिस्टर्स हैं? सब 6 ohm के, तो 6 divided by n. How many resistors are there? 3 divided, you will get 2. तो R equivalent for this means आप इन तीनों रेजिस्टर्स की जगह पर आप एक रेजिस्टर लगा दीजिए 2 ohm का, वो बराबर बात होगी. ओके, got it? Yes, sir. Okay, now moving to the next part is just to solve the equivalent resistance. So I'm going to wait a minute, I'm going to give you the questions here, and then we're going to solve that portions. Okay,
So first let's practice with the NCERT questions, and then after we're going to solve the our special questions. So start doing this one. Try this question. Sir, sorry, which question? Which question? Question number 1. Okay, okay. Sir, 25. Very good. I'm proud of you. Okay. Try to solve this question, that is 6, and that is very important. Here you need to find the a copper wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity is 1.6 ohm. What is the length of the wire when the resistance is 10 ohm? And how much the resistance change if the diameter is doubled? So वो बात की बात है, ये वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे. पहले आप उसकी लेंथ कैलकुलेट कीजिए. अगर आपको किसी एक वायर का डायमीटर आपको 0.5 mm दे रखा है, so if it is being given to you that diameter is the diameter is 0.5 mm, तो रेडियस आपका हो जाएगा 0.25 mm. Okay, is equals to 0.25 into 10 raised to the power minus 3 meter, and here this will be radius. Okay, you can write here, then radius would be equivalent to this one. Okay, and here you know that pi is equals to 3.14. You have to take this value, and rho is being given to you, that the value of rho is given to you, that is 1.6 into 10 to the power minus 18. So 1.6 into 10 to the power minus 18, sorry, minus 8 ohm meter, and R you need to calculate. R is being given to you, that is 10 ohm. Length you need to calculate कितना आएगा. Formula आपके पास होगा R is equals to rho L upon A, means you need to write this value, that it will be L you need to calculate, so you can write here R into A upon rho. It will be equivalent to A. Okay, now put this value R. A you know that is 3.14 into pi R square into pi R square upon rho is equals to L. Calculate the length.
So what is the value of rho? Rho is being given to you, that is 1.6 into 10 power minus 8. Minus 8.
calculated. आज there is an Indian festival today, that is Lori, इसलिए आज बच्चे absent कर गए. Maybe, sir. So I got A You got area. you got the area. You need to find out the length of the one. Are you first multiplying these, calculating the area? Yes. Why you are going to the so difficult and so difficult calculation? So use this 10 into 3.14 into 0.25 into 0.25 into 10 raised to the power minus 3 into 10 raised to the power minus 3 upon 1.6 into 10 raised to the power minus 8. Okay, got it? Yes, sir. This 10 raised to the power minus 8 when goes to upside, it will become 10 raised to the power positive 8. Positive 8. And this will become add up and will become minus of 6. 10 raised to the power minus of 6 and positive 8 will gives you total 10 raised to the power 8. Sorry, 10 raised to the power 2. Got it? Got it, sir. So in place of this one, I'm just doing here क्योंकि जगह नहीं है नीचे तो मैं erase करके कर देता हूँ. Okay. So here if I'm writing here 10 raised to the power 2. Okay. Got it? Got it, sir. 2 10 here I'm मैंने यहाँ से हटा देता हूँ 10 की पावर. अब फिर से यहाँ पर मेरे पास दो zeros है. So I have to write here 10 की power 4. I can write 10 की power 4 because I have to write here 100 into 100. दो डिजिट बाय डेसिमल है तो नीचे हटाऊंगा तो ये आ जाएगा आंसर. यहाँ समझ आया? Yes, sir. Now this and this value will get again ये फिर से डिवाइड कर जाएगा. यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज बचेगी यानी सिर्फ 100 बचेगा. ओके, गॉट इट? Yes, sir. और यहाँ पर मैं एक वैल्यू 110 यहाँ पर है और एक 10 यहाँ पर है तो यहाँ पर सिर्फ 1 10 की पावर 1 बचा है यानी कि ओनली 10 इज अवेलेबल है. ओके, समझ आया? Yes, sir. Only 10 is there. Okay, now this is 25 into 25 and this is 3.14 divided by 3.14. बताइए 16 2 का कितना होता है? 32. 32. So that is 1.6 to 3.2 approximate. Yes, sir. So it will be approximate 2 times कट जाएगा इससे. थोड़ा सा छोटा है तो मान लेते हैं 2.98 कट जाएगा. ठीक है? Yes, sir. ये कंसीडर कर लेते हैं 2.98 टाइम्स. और यहाँ पर हमारे पास है 25 into 25 और एक 10 हमारे पास बच रहा है अभी भी. सो आपको पता है 25 है यहाँ पर, इसको 2 ही कंसीडर कर लेते हैं हम लोग. 2 ही कंसीडर कर लेते हैं. 1.98 क्या करें अप्रोक्सीमेट 2 ही कंसीडर कर लेते हैं. इट इज 2. थोड़ा सा आंसर कम करके लिख देंगे. सो यहाँ से हमारे पास आएगा नाउ यू कैन राइट इट 5 5 and 1 and 5 1 and 5 5. That will be 125 मीटर लेंथ आ जाएगी. What about the 6.25? Okay, you multiplied it. 6.25 कहाँ पर? ये मैंने कट कर दिया ना. Okay. ये मैंने वो तो 25 हो गया था दोनों 25 क्योंकि डेसिमल्स हटा दिए थे मैंने उसके. 25 हो गया. अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने इस 5 को कट किया तो 5 1 5 5 25 and 5 ये वाला 5 कट गया था. ओके, तो दैट 125 मीटर. 125 The length is 125 meter. हाँ, लेंथ इज 125 मीटर. आप इसको थोड़ा सा कम समझ लीजिए 122 मीटर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने 198 लिया था ना. Okay. अप्रॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 मीटर अप्रॉक्स. ओके, Got it, sir. गॉट इट. तो इस तरह से हम लोग को करना होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आज लोरी बजा रहे हैं बच्चे. लोरी, दे आर सेलिब्रेटिंग द लोरी. You know, heard about the Lori? I unfortunately have not. There is a festival where the people used to burn some fire, and in Punjab and it is generally celebrated. They used to burn some fires and during the night hours, and they wear new dresses and they have two I think 2 स्टिक टाइप डांस होता है. वो 2 स्टिक से ऐसे कट करके खेलते हैं. तो 2 स्टिक से मेल एंड फीमेल्स इस तरह का फेस्टिवल होता है लोरी. चलिए सो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं बेटा. चलिए ये बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 करके बताइए आप मुझे. क्वेश्चन नंबर 8.
बेटा R इज इक्वल टू V अपॉन I वाला फॉर्मूला लगेगा और ध्यान से करना. ओके. All right, sir. Sir, got it. Okay, what's your answer? I got 4.8 into 10 to the power of 3 ohm. Very, very good. Is it correct? Yes, बिल्कुल correct, absolutely. Do question number 10. Try to do this. पूरा जितना भी पढ़ाया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये होगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए.
डन बेटा हुआ? डन? Sir, just 2 minutes. Sir, got it. Yes. What's your answer, beta? What's your answer? I got 4. 4. Very good. How you did? There are 2 formulas. Ohm's law I did, and this the formula of this. You know that R equivalent in parallel is equals to R each upon N. You know? Yes, sir. And what is the value of R equivalent? You have to use the formula R equivalent is equals to V equivalent upon I equivalent, V upon I, and a total current, total voltage upon total potential current. Okay, total potential difference upon total current. So you have to write here that R each आपके पास 176 ओम के रेजिस्टर से आपको N की वैल्यू निकालनी कि कितने रेजिस्टर्स आप कनेक्ट कर सकेंगे. V आपको दे रखा है 220 और करंट I आपको दे रखा है मैक्सिमम 5 एम्पियर्स. ओके 5 एम्पियर्स दे रखा है ना. So when you divide it by this, you will get 4. And when you get this one n will goes to that side, and this 44 will comes down. You will get here 176 upon 44 is equals to n. You divide it by 11, you will get 4 upon 11 ones are 11, 16, but you will get 4. So n is equals to. Got it? Yes, sir. Okay. Now do question number. Do question number. Do question number 11. 11.
Sir, can you explain this one? You got the answer? No, I did not. You don't know the answer. Okay, let's solve this question. Okay, let's solve. So this is simple. How will you be able to solve this one? Is that you need to calculate the you have three resistors each of 6 ohm. Three resistors each of 6 ohms, and you have to connect these resistors in such a way that you are going to get an equivalent resistance of 9 ohm. As I have already told you that whenever we are going to get the equivalent resistance, okay, if I connected all the resistors in series, then they will be add up. If we have three resistors equivalent, okay, there's 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, then the total equivalent resistance will be R1 plus R2 plus R3, and that would be 6 plus 6 plus 6, and that would be 18 ohm. Okay, and if I connected them in parallel, all three, like this way, then 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, and here we are going to get this R equivalent will be equivalent to R each upon N, that would be 6 divided by 3, that would be 2 ohm. But we need to arrange these resistors in such a manner that we are going to get an equivalent resistance of uh, 6 ohm, sorry, 9 ohm in the first case, and in the second case, we are going to get this one as 4 ohm, I think, 4 ohm. Okay. सो फिर मैंने तीनों को पैरेलल में लगाया तब भी हमारा आंसर नहीं आया, तीनों को सीरीज में लगाया तब भी हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब दो को पैरेलल और एक को सीरीज में लगा के देखते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोगों ने दोनों को पैरेलल में लगाया, इफ वी कनेक्ट द टू रेजिस्टर्स in parallel and one resistors in series, then you know that this is 6 ohm, this is 6 ohm, this is 6 ohm. Consider this is as 6 ohm, and now calculate the equivalent resistance of these two resistors. The two resistance of these resistor would be equal to 1 upon 6 plus 1 upon 6, or you can consider it as by this formula that R each upon N, that would be 6 divided by 2, you will get 3 ohm. So अगर 6 ohm के हमारे पास दो resistors होंगे, तो उनकी equivalent resistance हमारे पास 3 ohm आएगी, and we can write instead of this, we can write here only 3 ohm. This is already 6 ohms. Now, for calculating the equivalent resistance of these two, we can get here as 6 plus 3, that would be 9 ohm. Means instead of these two resistors, you can place here a 9 ohm resistors. Okay, got it. So if we connect one resistor in series and two in parallel, then the equivalent resistance will be 9 ohm. The first case is solved. Yes, sir. The second case is you need to get the equivalent resistance as 4 ohm. So how can you get the equivalent resistance as 4 ohm? If you connect the two resistors in series and one with parallel to them, then you will get 6 ohm, 6 ohm, and 6 ohm. Now you first add these two resistors, means the equivalent resistor for these two, the equivalent resistance for these two resistors would be 12 ohm because they are connected in series. So this will be 12 ohm instead of this 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, two resistors, you can place only 12 ohm. And another one is of 6 ohm, 6 ohm. Now, when you get the equivalent resistance, 1 upon R equivalent is equals to 1 upon 12 plus 1 upon 6. Now you get the LCM as 12. 1 plus 2 into 2 will get 2 here. Okay. You will get 2 as here, and you will get here 3 by 12. When you cut it, you will get 1 by 4. 1 upon R equivalent. So when you reciprocal this one, if you also get reciprocal, you will get R equivalent is equals to 4 ohm. Now you got it? Yes, sir. So this is the arrangement. Okay. Okay. Yes, sir. Got it. Okay. Here we have an in-text question. Question number 4 is similar to this one. Do this question. There are the three different resistors, 2 ohm, 3 ohm, and 6 ohm. How can you connect these three resistors so that once time you get the answer as 4 ohm, another one you get the answer as 1 ohm. Do this one. Do question number
The second one, right? क्या कह रहे हो बेटा? How much? The second question, right? नहीं, fourth question, fourth Fourth, okay. question. Done.
डन। Sir, can you explain? हाँ, आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझनी होगी कि दूसरे केस में आपको दे रखा है 1 ओम, और 1 ओम सबसे कम, मतलब रजिस्टर से भी कम के आंसर है। मतलब दिस इज वी कैन सिंपली से दैट कि 1 ओम जो है वो 2, 3 और 6 इन तीनों की वैल्यू से कम है। तो उसका मतलब आपने इन तीनों को पैरेलल में ही कनेक्ट करना होगा, तभी आपको सबसे कम आंसर मिल सकता है। अदरवाइज आपने एक को भी सीरीज में किया तो आपको उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तो वो 2 से ज्यादा आंसर आएगा। इस कंडीशन पे 1 ओम जब ही आ सकता है जब आपने तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हो। ओके, अब रही बात 4 ओम की। 4 ओम कैसे आप कनेक्ट करेंगे? आपको आंसर 4 से ज्यादा चाहिए। सो कनेक्ट दिस टू एंड टू दिस रेजिस्टर इन पैरेलल एंड दिस इन सीरीज। एक बार ट्राई करके देखो। कनेक्ट दिस 2 ओम रेजिस्टर इन सीरीज एंड दिस टू इन पैरेलल। फिर इन दो पैरेलल की जब 3 ओम और हम लोग 6 ओम को एक साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो कितना आएगा। फिर इसको करो आगे। Got it, sir. Got the answer? Yes, sir. And when you connect all the resistors in parallel, 1/2 plus 1/3 plus 1/6, are you getting 1? Yes, sir, I got one. Anna? Is a similar way, this question is being given to you. What is the highest resistance? When you connect all these resistance in series, you will get the highest resistance. And the lowest possible resistance, that would be when you connect them all in parallel, then it will be the lowest. Okay? Got it? Yes, sir. भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जज करिए, मतलब बिना सॉल्व किए कितना आपका आंसर आएगा। अगर आपने 1 ओम की रेजिस्टेंस और 10 लेक ओम की रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में कनेक्ट की, तो आपको मैंने बताया था जब भी हम लोग दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा आंसर 1 से कम ही आता है। तो इसमें 1 से कम आएगा आंसर, इसमें भी 1 से कम आएगा, और इसमें भी हमारे पास इन तीनों में भी हम लोग को 1 से कम आंसर मिलेगा। ओके, जो सबसे कम होगा उसी से कम मिलता है। गॉट इट? Got it, sir. गॉट इट। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।